Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. अस्य श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री दत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आं आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लें क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे अथ ध्यानम् जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्रचन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नपिशाचवत् दत्तात्रेयो हरि साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायक वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापुरजपादर माहुरीपुरभिक्षाशी सह्यशायी दिगम्बर इन्द्रनीलसमाकार चन्द्रकान्तिसमद्युति वैडूर्यसदृशस्फूर्तिश्चलकिञ्चिज्जटाधर स्निग्धधावल्ययुक्ताक्षोऽत्यन्तनीलकनीनिक भ्रूवक्षश्मश्रुनीलाङ्क शशाङ्क सदृशानन हासनिर्जितनीहार कण्ठनिर्जितकम्बुक मासलासो दीर्घबाहु पाणिनिर्जितपल्लव विशालपिनवक्षाश्च ताम्रपानिर्दलोदर प्रथुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थल रम्भास्तम्भोपमानोरुजानुपूर्वैकजङ्घक गूढगुल्फकूर्मपृष्ठोलसत्पादोपरिस्थल रक्तारविन्दसदृशरमणीयपदाधर चर्माम्बरधरो योगी स्मर्त्रगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षित सिद्धासनसमासीन ऋजुकायो हसन्मुख वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभयङ्कर बालोन्मत्तपिशाचीभिः क्वचिद्युक्तपरीक्षित त्यागी योगी महाभोगी नित्यानन्दो निरञ्जन सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामद भस्मोद्धुलित सर्वाङ्गो महापातकनाशन मुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः एवं ध्यात्वानन्यचित्तो मद्वज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समया सह सञ्चरेत् दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलडमरुङ्गदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम् अथ पञ्चोपचारै सम्पूज्य ॐ द्राम् इति अष्टोत्तरशतवारं जपेत्। ॐ दत्तात्रेयशिरः पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः भालं पात्वानसूयेयश्चन्द्रमण्डलमध्यग कूर्चं मनोमयः पातु हंसं द्विदलपद्मभुः ज्योतिरूपोक्षिणिः पातु पातु शब्दात्मकश्रुति नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मक जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धार्मिक कपोलावत्रिभुः पातु पात्वशेषं ममात्मवित् स्वरात्मा षोडशाराब्जस्थितस्वात्मावताद्गलं स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु क्रतादिभू जत्रुनी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरि कादिठान्तद्वादशार पद्मगोमरुदात्मक योगीश्वरेश्वर पातु हृदयं हृदयस्थित पार्श्वे हरि पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृत हठयोगादियोगज्ञ कुक्षि पातु कृपानिधि
डकारादिफकारान्त दशारसरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वह्न्यात्मकोऽवतु वह्नि तत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्डो वासुदेवात्मकोऽवतु वकारादिळकारान्त षट्पत्राम्बुजबोधक जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन उरुसिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्तचतुष्पत्र सरोरुहनिबोधक मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुज जङ्घे पात्ववधूतेन्द्र पात्वङ्घ्रितीर्थपावन सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशव चर्मं चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसमांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मकोऽवतु अस्थिनीस्थिरदीपायान् मेधावेधा प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृति मनोबुद्धिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यज बन्धुन् बन्धुत्तमः पायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् ग्रहारामधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु पश्वादीन् पातु शाङ्ग्रवृत प्राणात् पातु प्रधानज्ञो भक्षादीन् पातु भास्कर सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तक पशुन् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राचां विषहरः पातु पात्वाग्नेय्यां मखात्मक याम्यां धर्मात्मकः पातु नैरत्यां सर्ववैरिहृत वराह पातु वारण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु कौबेर्यां धनदः पातु पात्वेशान्यां महागुरु ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पात्वधस्ता जटाधर रक्षाहिनं तु यस्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वर अथ श्रीदत्तमालामन्त्रजपः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्रसन्तुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाचवेशाय महायोगिने अवधूताय नसूयानन्दनवर्धनाय अत्रिपुत्राय ॐ भवबन्धविमोचनाय आं असाध्यसाधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्रौं असाध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय सौः सर्वमनक्षोभनाय श्रीं महासम्पत्प्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय द्रां चिरञ्जीविने वषटवशीकुरु वशीकुरु वौषट आकर्षय आकर्षय हुं विद्वेषय विद्वेषय फट् उच्चाटय उच्चाटय ठः ठः स्तम्भय स्तम्भय खें खें मारय मारय नमः सम्पन्नय सम्पन्नय स्वाहा पोषय पोषय परमन्त्रपरयन्त्र परतन्त्राणि छिन्दिः ग्रहान् निवारय निवारय व्याधिन् विनाशय विनाशय दुःखं हर हर दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ॐ एतन्मे वज्रकवचं यः पठे शृणुयादपि वज्रकायश्चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहमब्रुवम् त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जित सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽद्य इत्युक्त्वान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बर दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तः वर्तते बिल्लो दुरस्रवा नाम तदानीं श्रुतवानिदं सक्रच्छ्रवणमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्यसौ इत्येतद्वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिन
श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याह पार्वती। श्रीपार्वती उवाच एतत् कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम पुत्रकेन कदा जाप्यं किञ्यज्जप्यं कथं कथम्। उवाच शम्भुस्तत्तर्वं पार्वत्या विनयोदितं। श्रीशिव उवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं। धर्मार्थकाममोक्षाणामिदमेव परायणम् हस्तेश्वरथपादाति सर्वेश्वर्यप्रदायकम्। पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तत्। सङ्गीतशास्त्रसाहित्यसत्कवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञामतिप्रौढीप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखविवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम्। अष्टसङ्ख्यामहारोगासन्निपातास्त्रयोदश षण्णवत्यक्षरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगका। अष्टादश तु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिशन्तुपैत्तिका। विंशतिश्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्थिकादय मन्त्रतन्त्रकयोगाद्या कल्पतन्त्रादिनिर्मिता। ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डादिग्रहोद्भवा सङ्गजादेशकालस्थास्तापत्रयसमुत्थिता। नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवा सर्वे रोगा प्रणश्यति सहस्रावर्तना ध्रुवम्। अयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् अयुतद्वितयावृत्त्या ह्यपमृत्युजयो भवेत्। अयुततृतीयाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रादयुतादर्वाक सर्वकार्याणि साधयेत्। लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धिर्भवत्येव न संशय। विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठिन् वै दक्षिणामुख कुरुते मासमात्रेण वैरिण विकलेन्द्रियम्। औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामी तिन्तिण्यां शान्तिकर्मणि। ओजस्कामोऽश्वत्थमूले स्त्रीकामये सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेहे सुतार्थिभिः। धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामयस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामो तत्काले सर्वदार्शितम्। नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुमालोक्य यो जपेत् युद्धे शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत्। कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणं। यत्र यतस्यास्थिरं यद्यत् प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं तत् सिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। इत्युक्त्वा च शिवो गौर्ये रहस्यं परमं शुभं यः पठेद्वज्रकवचं दत्तात्रेयसमो भवेत्। एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये त्रिसुतेन पूर्वं। यः कोऽपि वज्रकवचं पठतीह लोके दत्तोपमश्चरति योगे वरश्चिरायुः। इति श्रीरुद्रयामले हिमवत्खण्डे मन्त्रशास्त्रे उपासनाखण्डे शिवविजयसिद्धान्ते उमामहेश्वरसंवादे श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु।